हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लास्ट लुक फॉर नवरात्रि सीरीज। दिस इज फॉर पर्पल ड्रेस। सो आई होप आपको अभी तक के सारे लुक्स अच्छे लगे हों। इफ दैट इज द केस, प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब ऑल्सो एंड लेट्स बिगिन। जैसा कि आप देख सकते हो, आईब्रो मैंने ऑलरेडी फिल की है और इसके लिए मैंने यूज किया था फॉरएवर 52 का जेल लाइनर इन द शेड 008 विच इज अ वेरी गुड डार्क डीप ब्राउन शेड। Anyways, I do have a separate video on eyebrow tutorial. You can check out that. Eyeshadow base के लिए मैं यहाँ पर LA Girl का concealer use कर रही हूँ in the shade Pure Beige. And then with a fluffy brush, I am going to blend this. And then I am taking Revolution Banana Powder to set this. I will be using Forever 52 brush number 43 to apply this. I am taking Revlon pencil in the shade Blackest Black और इसे मैं पूरी लिड पे लगाऊंगी। बहुत क्रीमी पेंसिल है तो अच्छे से अप्लाई हो जाता है ये प्रोडक्ट और ब्लेंड भी हो जाएगा इजीली। क्योंकि मैं डार्क शेड यूज करने वाली हूँ, दैट इज पर्पल, बेसिकली बरगंडी, तो उसके लिए अगर मैं ब्लैक यूज करूँ तो अच्छे से पॉप होगा। एंड देन आई एम गोइंग टू टेक एन आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश जो थोड़ा सा फ्लैट हो और इसे मैं ब्लेंड करना स्टार्ट करूंगी। क्रीज पे मुझे सबसे पहले देखना है कि अच्छे से ब्लेंड हो जाए, इससे पहले कि ये काजल सेट हो जाए। काफी डेंस ब्रश है लेकिन थोड़ा सा स्टिफ भी है। बहुत ज्यादा फ्लफी होगा तो ब्लैक पूरा यहाँ से वहाँ हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि ज्यादा वो यहाँ से वहाँ फैले, इसलिए मैं ऐसा ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ जो डेंस तो है लेकिन थोड़ा सा ग्रिप ज्यादा है, थोड़ा स्टिफ है ये। और जैसा कि आप देख रहे हो, ब्रश को भी मैंने नीचे से पकड़ा हुआ है। जितना पीछे से पकड़ोगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट अच्छे से फैल जाता है, जो अभी फिलहाल हमें नहीं चाहिए। आई शेडो के लिए मैं ले रही हूँ ब्राइड्स ऑफ इंडिया पैलेट फ्रॉम ग्लिटर गैलेक्सी कॉस्मेटिक्स एंड आई एम टेकिंग दिस शेड विच इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग। सेम ब्रश पे मैंने इसे ले लिया है और अब मैं पैट करते हुए पूरे लिड पे इसे लगाऊंगी। ब्लेंडिंग बाद में करनी है, पहले कलर हमें मैक्सिमम चाहिए तो अच्छे से पहले कलर को पैक करना है, उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे। एंड नाउ आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग इट। और पैक का 163 ब्रश ले रही हूँ मैं, विच इज अ वेरी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश एंड फिट्स टू माई आई परफेक्टली। कोई प्रोडक्ट नहीं है इस पे, क्लीन है ये। आई एम जस्ट ब्लेंडिंग द एजेस। So till here it is a purple smoky eye. Although this look is very much complete in itself, but as you all know, I will be applying glitter. I'm taking this beautiful shade which is perfectly matching to my outfit today, and this is again from Glittery World. So I will be applying it using my finger. Now I'm taking this one from Kingdom of Lashes palette. And let's see, what do we see here? Wow, oh, this is looking very unique. Burgundy shade भी है, purple भी है, थोड़ा सा blue भी है, and wow, what do you guys think? Can you see this in the camera? I hope आपको दिखाई दे। Can you see now? Now I'm taking a clean finger और इसे मैं अच्छे से प्रेस करूंगी, just making sure अच्छे से ये स्किन पे बैठ जाए। बैठेगा नहीं तो बार बार फॉल आउट्स होंगे। Now to highlight my brow bone and inner corner, I'm taking NARS and I will apply it using a sponge applicator brush from Vega. As you can see, this eye look does not require any eyeliner in particular, लेकिन आपको चाहिए तो आप लगा सकते हो। अब मैं quickly दूसरी आई का भी मेकअप कंप्लीट करूंगी and I will apply some false lashes as well. फेस पे ऑलरेडी मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर और लिप्स पे निविया का लिप बाम। फॉरएवर 52 का गोल्ड वाटर प्राइमर मैं यूज कर रही हूँ विच इज वेरी लाइट वेट। So if you have oily skin, this can be a very good primer for you. इनिशियली एकदम वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर जैसा ये फील देता है फेस पे एंड देन थोड़ी देर में ये टैकी हो जाता है, जिससे आपका फाउंडेशन अच्छी तरह से सिट करेगा। दिस इज फॉरएवर 52 कंसीलर व्हील इन द नंबर 3 और इसमें मैं ऑरेंज शेड यूज करूंगी अंडर आई सर्कल्स के लिए और फेस पे जहाँ भी लाइट पिगमेंटेशन है उसके लिए मैं येलो वाला यूज करूंगी। आई एम टेकिंग दिस प्रोवार्ड ब्रश इन द नंबर 64 टू अप्लाई दिस। फर्स्ट आई विल अप्लाई येलो वन और जहाँ भी पिगमेंटेशन है वहाँ मैं डैबिंग मोशन में इसे अप्लाई कर रही हूँ, तो इससे ये ब्लेंड भी हो जाएगा और अपनी प्लेस से ज़्यादा मूव भी नहीं होगा। Then I'm taking orange one for under eye circles.
Then I am taking the same loose powder to set this. सेट कर देने से ये ऑरेंज करेक्टर जो है आपके फाउंडेशन के साथ मिक्स होने से बच जाएगा. Now I will mix two foundation, Wet n Wild Photo Focus foundation in the shade Golden Beige and Maybelline Superstay foundation in the shade 312 Golden. I'm taking a flat foundation brush to apply this. पहले मैं मिक्स कर रही हूँ इसे. और अब मैं पैक का ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और बहुत ही क्विकली मुझे इसे ब्लेंड करना है बिकॉज ये दोनों ही फाउंडेशन बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं. इट्स ब्लेंडिंग ब्यूटीफुली और शेड भी काफ़ी अच्छे से मैच हो गया है. मेबलिन वाला थोड़ा सा डार्क हो जाता है गोल्डन शेड और वेट एंड वाइल्ड का थोड़ा सा फेयर. सो दैट्स हाउ आई मिक्स इट. गोल्डन वाला शेड जो है मेबलिन का वो मैं थोड़ा कम लेती हूँ एंड आई टेक मोर ऑफ वेट एंड वाइल्ड. जो भी थोड़ा बहुत है मैं अंडर आइज पे भी लगाऊंगी क्योंकि अंडर आइज पे ये फाउंडेशन अच्छे से ही काम करता है. सेट जल्दी हो जाता है, डजंट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस. सो यस आई कैन अप्लाई इट. I'm taking L'Oreal Infallible Full Cover Concealer in the shade 314 to highlight certain areas on my face. तो जहाँ भी मैंने लाइट कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पर मैं रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर यूज़ करूँगी. दिस विल फर्दर हाईलाइट दीज एरियाज. एंड फॉर द रेस्ट ऑफ माई फेस आई विल यूज Maybelline Fit Me powder in the shade 20. Today I am using powder contour from PAC in the number 10. Taking a smaller brush for nose contouring. Now I'm taking some more banana powder to give sharp edge to the contouring which I have done. Blusher मैं ले रही हूँ NELF का in the number 11. I will be using this highlighter from Faces Canada Face Palette in the shade Glow. With a fluffy brush, I'll apply it to highest points of my face. Forever 52 का लिप पैलेट में यूज़ कर रही हूँ and I'm taking this shade and I will apply it using Pro Art brush in the number AE26. By the way, I do have a separate video on this palette. If you want to buy it, you can check that out. Now before applying the setting spray, I would like to complete the eye makeup. With a small blending brush, I am taking Strong और इसे आँखों के नीचे लगाऊंगी मैं. Connecting it here. Now I'm taking Bold on a very small brush और इसे just waterline के नीचे smudge करूँगी. Now I'm taking a clean blending brush and will blend everything. Now I'm taking NYX Wonder Pencil in the shade 001 for my waterline. Here I am using XL Volume Mascara from Forever 52. Lastly, I am going to apply Color Essence Fixing Spray.
So that's about Navratri makeup series. I hope you guys have enjoyed it. मुझे बनाने में बहुत मज़ा आया. It was tiring but very very interesting also because सब में मुझे glitter use करना था and there were color challenges also. So I hope आप लोगों को अच्छा लगा है. And throughout this series मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी की है during makeup application. I hope वो tips आप लोगों के कुछ काम आई हो. If that is the case, please like this video, subscribe to my channel and of course comment below which one was your favorite look amongst all the 9 looks. So मिलते हैं मेरी next video में. Bye bye.